हाँ बिल्कुल, वो कैपेसिटी आ जाएगी आपको। सर लेकिन हमने लास्ट में फाइंड ही नहीं किए थे सर, तो इसका मतलब वो ऑलरेडी सेटिस्फाई करती है वो कंडीशन? नहीं, वो तो आपकी एक होम एक्टिविटी थी ना, यस सर, मेरे ख्याल यस में तो आप। आप कर चुके होंगे। वो हम एड्रेस करेंगे, ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं तो फिर उस पे मेरे ख्याल में मैं वो रिकॉर्ड करूँगा कि किस तरह हम कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं। वो अलग से ओके मैं रिकॉर्ड करूँगा और फिर पोस्ट करूँगा। सही। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। Okay, today we will discuss the design of T and L beams in flexure. These are the topics which will be addressed in this lecture. Introduction to T and L beams, SCI code provisions for T and L beams, different design cases, design of rectangular T beam and design of true T beam, and finally references. These are the objectives of the lecture. And this is the introduction. The T or L beam gets its name when the slab and beam produce the cross sections having the typical T and L shapes in a monolithic reinforced concrete construction. So what does it mean? In a reinforced concrete building, the beams will always be T-shaped beam or L-shaped beam. If it is an interior beam like this, it will be a T-shaped beam. And if it is an exterior beam, the shape will be L. So it will be L-shaped beam. Clear? Because in a reinforced concrete building, there will always be slab resting on beams. So the shape of the beams will be either T shape or L shape. Clear? यस सर। Now we have discussed the design of rectangular shapes RC sections. But if we understand the basic concept involved behind the design of rectangular RC sections, we can easily design such types of section, that is T-shape or L-shape beams. Okay. Now this is very important. The connection between the beam and the slab, it will be monolithic. Without this, there will be no T or L-shaped beam. But since practically there will be monolithic connection between the beam and the slab, so it will form a T-shape or L-shaped beam. Now what do you mean by monolithic connection? Anyone? सर जो कंस्ट्रक्शन के टाइम ही दोनों पेपर सर। Sir, casting at the same time, sir. Casting at the same time. Anyone else? सर जिसका ये वो reinforcement है Is the वो part of the मतलब slab. दोनों का एक ही वो So there is a misconception usually that the connection is considered as monolithic when the concrete of beam and slab is poured simultaneously. But this is wrong. The connection, for example, if we draw the section of this T beam, it will look like this. Okay. This upper portion of the beam, which is basically the slab portion, it is known as the flange of the beam, and this lower portion of the beam, this is called rib of the beam. Now monolithic means that there will be reinforcement continuity between the beam and slab. If the slab reinforcement is continued into the beam, or the beam reinforcement is continued into the slab, it will form a monolithic connection. Even if the concreting in beam and slab, they are poured separately. Clear? So casting or pouring the concrete simultaneously doesn't form a monolithic connection.
Monolithic connection will form only when there is reinforcement continuity between the two members. Clear? So since normally the stirrups provided in the beams, they are continued into the slab like this. Okay. So since there is reinforcement continuity here at the junction, so therefore it will form a monolithic connection between the web and the flange. Clear? And that is why it will be called a flange of the beam. Clear? Yes, sir. So due to this monolithic connection, the beam will be called a T-beam or L-beam if it is exterior beam. In this lecture, we will mainly study the design of T-shaped beam, but using the same mechanics, you can design L-shaped beam also. Okay, but before discussing the design of T or L beams, I told you, if we understand the basic concept behind the mechanics involved in the design of rectangular RC section, so then very easily you can design the beams, reinforced concrete beams of any shape. So first of all, let me ask you a question. For example, if there are two beams having the same length and same loading condition, okay, both are simply supported beams, for example, beam 1 and beam 2. Beam 1 is having cross section like this, okay, and beam 2 is having cross section like this. Now the effective depth of both these sections, it remains the same. Width of the beam also remains the same. So now, will there be any difference in the design reinforcement for the two sections? आवाज आ रही है? नो सर, सर वो तो BD पे डिपेंड करती है, दोनों सेम है हमारे पास. Anyone else? जी. It will not affect the design of the beam, because if you see, there are two equations. S is equal to mu divided by pi Fy d minus A by 2, and A is equal to AS Fy divided by 0.85 FC prime B. In both cases, you can see B and D remains the same. Mu material properties, demand, all are same. Both are having the same geometric and material properties, and the loading condition is also same. So the design reinforcement coming for both the sections will be same, and consequently the flexure capacity of both the sections will also be same, because the flexure capacity phi Mn will be equal to phi AS Fy into D minus A by 2. So if both are having the same D and same AS, so it will have the same flexure capacity. Clear?
But now you can see that there is difference in the shape of the two sections. Both sections are having different shapes, but the design remains the same. So what did you conclude from this? जी सर के डिजाइन शेप पे डिपेंड नहीं करता. अच्छा, इसको अगर आप देखें, it means that you can design any shape of section as a rectangular beam if the shape of the compression block is rectangular. In both cases, if you see, there will be compression in the top fibers and tension in the bottom fibers. Okay, इस तरह है कि नहीं? So you can see in both cases, the shape of the compression block is rectangular. So that is why even this section you can design it as a rectangular beam, because the shape of the compression block is rectangular in this case. What if negative moment, for example, if it is a continuous two span beams having this section? So what if we design the same section for negative moment, or this moment? In that case, the lower fibers will be in compression like this. और अब बताएं मुझे, will there be difference in the design of rectangular section and this section? Yes, sir. Why? Because now the shape of the compression block is no more rectangular. So the conclusion is that you can design any shape of the beam, any shape of the section as rectangular beam when the shape of the compression block is rectangular. Up clear? है? Yes, sir. Yes, sir. And also you can see, and why it is so, because you can see that if you remember in the very basic assumptions, we studied that in the reinforced concrete mechanics, the tensile strength of concrete is completely ignored in the design, or you can say that the contribution of the concrete under tension is ignored in the design. So you can see that below this, the section is in tension, and since we assume that all the tensile stresses will be taken by the steel, okay? So whichever the shape of the section is in the tension region, it will not affect the design of the beam. Clear? सर दोबारा रिपीट करें सर. देखिए, आपके पास ये एक बीम है ना, we say Yes, sir. that the compressive stress will be taken by the concrete and the tensile stress will be taken by the steel. इस तरह है कि नहीं? Yes, sir. So whatever the shape of the section is in the tensile portion, it will not affect the design because we ignore the contribution of concrete in the tensile region. अब समझ में आ रही बात? Yes, sir. Because this portion is neglected, this portion of concrete which is in tension, it is neglected in the design. We consider that all these tensile stresses will be taken by or will be resisted by the steel alone. Clear? So the shape of the section in the tensile portion will not affect the design of the beam. So finally the conclusion is that
whatever the shape of the beam is, if the shape of the compression block is rectangular, you can design the beam as a rectangular beam. Clear? Yes, sir. Clear. Thank you. क्या क्लियर है? अच्छा, जब ये क्लियर है तो अब हम इसी बीम को, फॉर एग्जांपल दिस इज ए टू स्पैन कंटिन्यूअस बीम. फॉर एग्जांपल इफ द शेप ऑफ द सेक्शन इज टी, उसको जरा हम डिस्कस करते हैं. सही, this is a two span continuous beam and the shape of the section is a T beam. It is a T beam. Okay. Now you know that the bending moment diagram of this beam will be like this. There will be zero moment at the exterior support because it is a hinge support. There will be negative moment developed at the interior support. So there will be positive moment at the midsection of the beam and negative moment at the interior support. Clear? इसी तरह है ना? Yes, sir. Okay, so first of all we will discuss that how this T section will be designed for this negative moment. तो यहाँ पर आप जरा देखें, design of T section for negative bending moment. अच्छा, in case of negative bending moment, where will be the compressive stresses? In the lower web part or in the flange part of the beam? Bottom fiber will be in compression or top fiber will be in compression? Sir, in case of negative, bottom fiber will be in compression and top will be in tension. हाँ, bottom fibers will be in compression and top fiber will be in tension. So what does it mean? It means that the compression block will form in the web part of the beam. इस तरह है ना? Yes, sir. तो यहाँ पर आप जरा देखिए इसको. This is the same T-shaped beam. For negative bending moment, you know that the bottom fibers will be in compression, top fiber will be in tension. So the compression block will form in the web part of the beam. Clear? And now, for example, if the width of the web is BW is denoted by BW, and the width of the flange is denoted by B effective. How to calculate this B effective, we will study it in the coming slides. But for example, the width of the flange is denoted by B effective and width of the web is BW. Similarly, the thickness of slab, for example, if it is denoted by HF, and the total depth of the beam, including the slab, if it is denoted by H. Okay, so now can you tell me how we will design this beam for negative bending moment? Can you design this beam for negative bending moment? Sir, reinforcement हम top में provide करेंगे. वो तो हम टॉप में प्रोवाइड करेंगे ना. Reinforcement कैलकुलेट किस तरह करेंगे? Using the same rectangular beam design, because as I told you that the design, you can design any shape of beam as a rectangular beam if the shape of the compression block is rectangular. तो इस केस में आप देखें, the shape of the compression block is rectangular, so you can design this beam as a rectangular beam. अब clear है कि नहीं? Yes, sir. Clear. So
what you will do again, you will use the same two equations. A is equal to m negative divided by phi fy into d minus a by 2, and a will be equal to a is fy divided by 0.85 fc prime, and here b will be bw because the compression block will be in the width portion. अब क्लियर है? बस वही आप ट्रायल एंड एरर करेंगे, ट्रायल एंड एडजस्टमेंट से आप फाइनली the design enforcement will be calculated. So there will be no difference between the design of this beam for negative bending moment and design of rectangular beam, because you can see that the shape of the compression block is a rectangle. Clear? So it is not the shape of the section which will affect the design. It is basically the shape of the compression block which will basically affect the design of a section. So since the shape of the compression block remains rectangular, so you can use the same equations for the design of this shape beam. Clear? Be clear hai ki nahi? Clear hai, sir. Yes, sir. Clear. Acha. Now we will discuss the design of this beam for positive bending moment. In positive, this was the design of the T section for negative bending moment. Now how to design this T section for positive bending moment? So now we will discuss the design of T section for positive bending moment. Clear? Okay, so again the same section. Now for positive moment, which fibers will be in compression? The top fibers or the bottom fibers? Top fibers. The top fibers will be in compression. But now you can see that there may be two cases. The compression block may form within the flange like this. In other words, you can say that the depth of the compression block may be less than HF. This is case 1. A may be less than HF. Okay. And the depth of the compression block, it may be greater than HF. Like for example, this is another case, case 2. This is depth of the compression block, and this is the thickness of slab. Now, in case of when the depth of the compression block is less than HF, will there be any difference in the design of this beam? No, sir. ये भी rectangular. We can also design the same beam as rectangular beam. Why? Sir, क्योंकि compression block rectangular है. Because the compression block remains rectangular, even in this case. And what about case 2? Can you design it as a rectangular beam? No, sir. Sir, modification can use. Why we cannot design it as a rectangular beam? Because it is not rectangular. Because the shape of the compression block in this case is not a rectangular. It is not a rectangle. Rather, it is a T shape
compression block. So you have to design this section as a T beam, as a T-shaped beam, because the shape of the compression block is T-shape. Clear? So you can design a T-shaped section as a rectangular if the compression block, the shape of the compression block is rectangular. So in case 1, which will always be the case for regular beam slab system, for regular beam slab system, remember that always the depth of compression block will be less than the thickness of slab. ये बात आप याद रखें, सही? So you can always design the T-shaped section as a rectangular beam, because for negative bending moment उसमें तो कोई issue नहीं है, because the shape will be like rectangular. And even for positive bending moment, since always this case 1 will be governing, the depth of the compression block will always be less than the thickness of slab. So that is why you can design even the same section for positive bending moment as rectangular beam. Clear? उसमें सिर्फ आप इस तरह करेंगे कि वही दो इक्वेशन है, A is equal to mu positive divided by phi fyd minus A by 2, and A will be equal to A is fy divided by 0.85 fc prime. Now what will be this B? It will be BW or B effective? Be effective. Be effective, because you can see that the width of the compression block in this case is B effective. So बस ये आपने just replace करनी है. Instead of BW, you will place here B effective. You will replace BW with B effective. All the other design steps will be same. Clear? वही trial and error से आप finally AS calculate करेंगे. For the 2 consecutive trials, if you get the same value of AS, that will be your design enforcement. अब clear है? Now how to design this second case, we will study this in the coming slides. But up to this, for positive bending moment and for negative moment, now you can design a even a T-shaped section beam. Clear? अब clear है? Yes sir, clear. तो अब आप डिजाइन कर सकते हैं ना टी शेप सेक्शन को, Yes sir. for negative movement as well as for positive movement. And as I told you that in most of the cases, in almost all cases, the depth of the compression block will be less than HF. So always this will be the case. Case 1 will be governing. Okay. अच्छा. Now if you Sir? design this, जी सर आपने कहा रेगुलर स्लेब में हमारे पास हमेशा यही केस 1 सेटिस्फाई होगा, मतलब ये होगा, तो रेगुलर स्लेब से क्या मुराद सर? इसका मतलब जो नॉर्मल बीम स्लैब सिस्टम होते हैं, जो if it is a joist system in which the beams are provided at a very closer spacing and it is to heavy loading, तो उस केस में सेकंड केस आ सकता है. बट जो नॉर्मल बीम स्लैब सिस्टम होते हैं, यानी जिसमें हम बीम्स प्रोवाइड करते हैं एट नॉर्मल स्पेसिंग, उसमें फिर यही तो केस 1 हाँ, इट विल बी गवर्निंग. ओके सर. मतलब ये कि the depth of compression block will always be less than the thickness of slab. Clear? Yes sir, thank you. Acha, from the trial and error for positive moment, finally you will get the positive reinforcement, and this positive reinforcement will be provided in the bottom fibers because the bottom fibers are in tension. So this top positive reinforcement will be provided in the bottom section of the beam, and it will be enclosed by the stirrups like this.
Clear? Similarly, the negative reinforcement finally from trial and error will be calculated here, and this negative reinforcement, from this you will calculate the number of bars, and these will be provided where? कहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे? Top. Yes, these negative bars will be provided in the top fibers of the beam. It will be provided within the slab, like this. You can see here it will be enclosed by the stirrups. So the negative reinforcement, it will be provided as a top reinforcement. It will be provided in the slab within the width of the width. Clear? We will provide these slab, these reinforcement, these negative bars in the slab portion within the width of the width. Clear? यानी आप ये यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकते. Clear? We will provide these bars within the width of the width, in the slab portion within the width of the width. Clear? सर जी जी. सर ये पिछले लेक्चर्स में हमने जो रेक्टेंगुलर बीम की डिजाइनिंग पढ़ी थी सर, तो उसमें हमने ये स्लेब इंक्लूड किया था, लेकिन हम कंसिडर नहीं कर रहे थे, शो नहीं कर रहे थे वहां पे उस टाइम भी यही स्लेब, मतलब अभी हम जो नहीं, ये हमने उसको फॉर एग्जांपल हम वहां वो पे तो 18 जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जी सर देखिए रेक्टेंगुलर बीम तो रिइंफोर्स कंक्रीट बिल्डिंग में नहीं होता. रेक्टेंगुलर सेक्शन इट विल बी एल शेप और टी शेप बीम. ये तो बास केस में लाइक फॉर एग्जांपल इफ देयर आर बीम्स एंड इट इज सपोर्टिंग द ट्रस सिस्टम, उस केस में तो हो सकता है रेक्टेंगुलर शेप बीम. क्लियर? यस बट इफ इट इज ए रिइंफोर्स कंक्रीट स्लैब सिस्टम, तो उस केस में तो फिर टी शेप नहीं हो सकता, because there will always be magnetic connection between the beam and the slab. It will be a T beam if it is interior beam, or it will be an L-shaped beam if it is an exterior beam. Clear? But before discussing the analysis and design of T and L-shaped beam, we studied the design of rectangular beam to understand the behavior, the basic concept involved behind the mechanics. क्योंकि आप देखिए अब now it is an T-shaped beam, but you can design even this as a rectangular beam. अब क्लियर है ना? यस सर. तो आपने ऑलरेडी चूंकि रेक्टेंगुलर बीम डिजाइन पढ़ा है, तो now you can very easily design even a T-shaped section using the same rectangular beam design approach. अब क्लियर है? यस सर. तो हमेशा हम इस तरह करते हैं कि सिंपल केसेस को हम पहले स्टडी करते हैं और फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ हम जाते हैं. तो इफ यू हैव अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो इन अंडरस्टैंडिंग द सिंपल सेक्शंस, तो आप फिर कॉम्प्लेक्स सेक्शन को भी डिजाइन कर सकते हैं in the same way. Clear? Yes sir. अब आप देखिए इससे फाइनली कंक्लूजन क्या है. फाइनली कंक्लूजन ये है कि इवन टी शेप बीम को भी आप एज ए रेक्टेंगुलर बीम डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नेगेटिव मोमेंट के लिए तो हमेशा इसको आप एज ए रेक्टेंगुलर बीम ही डिजाइन करेंगे, बिकॉज यू कैन सी दैट फॉर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट द शेप ऑफ द compression block will always be rectangular. It will be in the web portion. और positive moment के लिए there are two cases, but as I told you, in almost all the cases, the case one will be governing.
तो उस केस में भी आप उसको एज ए रेक्टेंगुलर बीम डिजाइन कर सकते हैं. जस्ट यू विल रिप्लेस दिस BW विद B इफेक्टिव. क्लियर? Yes, sir. Clear. तो नेगेटिव मोमेंट. जी जी सर आई हैव क्वेश्चन. जी जी सर क्वेश्चन करें. यहाँ पे गांव में पहले ऐसा होता था कि सर सबसे पहले जो है ना स्लैब से पहले बीम्स किए जाते थे. जब वो सर वो प्रॉपर उसकी जो है ना सर वाटरिंग हो जाती थी और वो अपना स्ट्रेंथ अचीव अचीव कर जाते. तो फिर उसके बाद सर हम उस पे स्लैब करते सर. तो इसका क्या क्या मतलब क्या डिफरेंस है इसमें सर? जब हम अब हम जब करते हैं तो सर सारा जो है ना मतलब बीम्स और स्लैब एक साथ करते हैं सिमल्टेनियसली सर. मतलब पहले सर अलग अलग होता था. अच्छा, आपके क्वेश्चन को जो मैं समझा वो ये है कि what if the concrete is poured in the beam and slab simultaneously or if it is poured separately. यही क्वेश्चन है ना? यस सर. सर हम सेपरेटली क्यों नहीं करते? तो मैंने आपको कहा कि वो नहीं, सेपरेटली आप कर सकते हैं, मगर वो आप आसानी के साथ आप फॉर्म वर्क अभी हम पढ़ेंगे आफ्टर द डिजाइन, इसकी प्रैक्टिकली किस तरह फॉर्म वर्क बनाते हैं. तो उसमें आप देखेंगे कि साइमल्टेनियसली उसको पोर करना, उसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं होती. So it is better to pour the concrete simultaneously. Otherwise, even if you pour the concrete in beam width and slab separately, it will not affect the design because the reinforcement of the beam is continued into the slab. As long as the reinforcement is continued into the slab, like for example in this case the stirrups are continued into the slab, the connection will be monolithic. Clear? It doesn't depend on the pouring of concrete simultaneously or separately. It depends on the reinforcement continuity. Clear? यस सर. यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. अब आप पी सेक्शन को तो डिजाइन कर सकते हैं ना फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव मोमेंट. यस सर. सर जी जी सर ये नेगेटिव के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये भी आप जो 3 बार्स हमने प्रोवाइड कर दिए, ये वही बार्स होंगे लेकिन उसकी सिर्फ वो टॉप से हम बॉटम में उस वो शिफ्ट कर लेंगे, मतलब बेंड प्रोवाइड करेंगे उसी जगह पे जहाँ पे मूवमेंट चेंज हो रहा हो. अच्छा, ये मैं these bars will be provided only at the interior support because there will be negative moment at the interior support. और जो bottom bars हैं for positive reinforcement, those will be provided in the bottom reinforcement, and you can curtail some of the bars at the interior support. Clear? वो आगे हम पढ़ेंगे. सही. ओके सर. एक क्लास एक्टिविटी अगर हम करें इस पर, क्योंकि अभी तो आपको पता है कि हाउ टू कैलकुलेट द positive bars, how to design the T-shaped section for positive moment, or how to design it for the negative moment. उसको अब आप कर सकते हैं. सी. अच्छा, इसमें बस आप एक बात याद रखें, नेगेटिव मोमेंट में वही प्रोसीजर है. आप a is equal to 0.2d इन द फर्स्ट ट्रायल आप एज्यूम करेंगे a is equal to 0.2d, और जिस तरह आप रेक्टेंगुलर बीम के लिए करते थे वही प्रोसीजर है, ट्रायल एंड एरर. Finally, if you have the same value of S for the two trials, that will be your design reinforcement. Clear? But for positive moment, आप जो A की वैल्यू है in the first trial, you will assume it equal to HF. बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी आप A is equal to HF assume करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे. You will get the value of AS. Now you will put this AS in this equation.
Okay, here this will be effective, and from this you will calculate the A. Now from this trial, if you get the A value less than HF, so it means that the compression block depth is less than HF. तो उसी A को फिर आप दोबारा यहाँ पर पुट करेंगे, you will get another value of AS. You will again put this AS in this equation, and after 3 or 4 trials you will get the value of positive reinforcement. Clear? Yes, ये sir. समझ गए कि नहीं? अच्छा, when you assume A is equal to HF, if you put this in this equation and you get a value of AS, and in the next trial if you put this AS in this equation and you get A greater than HF, तो फिर क्या करेंगे? फिर आप इसको एज ए रेक्टेंगुलर बीम डिजाइन नहीं कर सकते. इसका मतलब ये यू हैव टू डिजाइन इट एज ए टी शेप बीम. अगर मैंने आपको कहा कि दिस विल नॉट बी द केस फॉर रेगुलर बीम शेप सिस्टम. क्लियर? ये क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर. क्लियर सर. अच्छा, अब इस पर अब एक क्लास एक्टिविटी कर देते हैं. आप खुद इसको डिजाइन करें. अच्छा, ये आपके पास एक ये क्लास एक्टिविटी है. यू कैन सी हियर इसमें आप देख सकते हैं दिस इज ए बीम कॉलम प्लेन. You can see the beams running in this direction and this direction, the columns. In this you have to design this B1 beam, which is a 2-span continuous beam, जो कि already हम discuss कर चुके हैं. The negative moment and positive moment for the beam is already given to you. Okay. The width of the web is given, it is 15 inches. The slab thickness and HF it is given, it is 6 inches. And the total depth including the slab thickness, it is also given to you, it is 24 inches. The only unknown is the B effective, which in this case is 87 inches. वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे हम बाद में डिस्कस करेंगे, मगर आप इस पर जरा इसको जरा सॉल्व करें. देखिए, this is the width of web given है, it is 15 inches. This thickness of slab is also given 6 inches. B effective मैं आपको बता देता हूँ in advance, it is 87 inches. इस एक्टिविटी के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू. फिलहाल आप इसको डिजाइन करें सेक्शन को, सही. एंड द टोटल डेप्थ including the slab, it is 24 inches, which means that this drop, this will be 18 inches. Clear? But you will calculate the reinforcement based on the total depth. और D उसी तरीके से आप assume कर सकते हैं 24 minus 2.5, which is equal to 21.5 inches. So for both negative and positive moment, you can assume the effective depth equal to 21.5 inches. Clear? अच्छा, आप देखें negative moment और positive moment already given है. So first of all you should design this beam for negative moment, and then you have to design the same beam for the positive moment. Clear? Material properties, remember it is 4 KSI, FC prime is 4 KSI and FY is 60 KSI. इसको जरा आप डिजाइन करें. शाबाश. मुझे नेगेटिव रिइंफोर्समेंट की वैल्यू बताएं और पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की वैल्यू बताएं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करें नेगेटिव
reinforcement नेगेटिव मोमेंट के लिए इसको डिजाइन करें. सही. ओके सर. You have only 15 minutes. Okay. सर. 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 जी. What is the question? सर नेगेटिव से मेरे पास 2.92 सम इंच स्क्वायर आ रहा है सर. अच्छा, एस नेगेटिव. आप आंसर जो है ना वो कमेंट्स में पोस्ट करें. सही. इसके साथ जो भी आंसर आ रहे हैं वो कमेंट में पोस्ट करें. एंड रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट your sessional marks will include the class behavior and class participation. ओके सर. जिसके साथ जो भी आंसर आ रहे हैं वो आप पोस्ट करें कमेंट सेक्शन में. सही.
सर जी सर जिस एज पे हमारे पास स्मॉल ए की वैल्यू एच एफ से लेस आ जाए वो एस हमारे पास रीइंफोर्समेंट होगा मैक्सिमम के लिए। नहीं, वो रिइंफोर्समेंट नहीं होगा। आप उसका मतलब ये होगा कि आपके पास ये केस 1 है, यानी यू कैन डिजाइन इट एज ए रेक्टेंगुलर बीम। तो फिर आप नेक्स्ट 2-3 ट्रायल करें ना। ओके सर यानी ओके सर। आपने फर्स्ट ट्रायल में ए एज्यूम किया एच एफ, उससे आपने ए एस कैलकुलेट किया, दोबारा आपने ए रिकैलकुलेट किया, डेप्थ ऑफ कंप्रेशन ब्लॉक, इट इज कमिंग लेस देन एच एफ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप 2-3 ट्रायल और करें, यू कैन डिजाइन इट एज ए रेक्टेंगुलर बीम। जस्ट आपने बस बी इफेक्टिव वहां पर डालना है। सही। ओके सर। अच्छा, इसके लिए आप मिनिमम और मैक्सिमम इन्फोर्समेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इट विल डिपेंड ऑन दी, it will involve the effect the web width, यानी आप BWD उसमें करेंगे। क्लियर। बी इफेक्टिव आपने यूज नहीं करना। इन केस ऑफ कैलकुलेटिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्फोर्समेंट यू विल यूज BW। क्लियर। तो इस सेक्शन के लिए आप मिनिमम और मैक्सिमम इन्फोर्समेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। Excuse me, sir. पॉइंट 0033 इंच स्क्वायर इज रो मिनिमम। ये रेशो है मिनिमम इन्फोर्समेंट, इट इज नॉन मिनिमम इन्फोर्समेंट। You have to multiply this with the effective area, that is BW and D. Clear? ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए जो रिइंफोर्समेंट है इट इज 1.53, बिल्कुल ये ठीक है। और नेगेटिव मोमेंट 2.92, ये भी ठीक है। ये दोनों आंसर ठीक है। सही। बाकी स्टूडेंट्स के साथ अपना चेक करें। सर इसके बाद आगे भी डिजाइन करें आप, बस ये यहाँ तक। नहीं नहीं, बस आप सिर्फ ये करें, मैं आगे आपको बता देता हूँ किस तरह करना है। इसके बाद आपने नंबर 6 बार्स के लिए नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करने हैं फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव मोमेंट। ये भी आप ओके करें। सर।
कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स पोस्ट करें, बिकॉज योर सेशनल मार्क्स विल इंक्लूड द क्लास पार्टिसिपेशन। तो ये जरूर करें। बार नंबर सर, बार नंबर 6 बार के लिए अब नंबर ऑफ बार्स भी कैलकुलेट करें, फॉर नेगेटिव एज वेल एज फॉर पॉजिटिव reinforcement। और इसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट भी कैलकुलेट करें इस सेक्शन के लिए। दैट इज वेरी सिंपल। उसमें आपने इस तरह करना है, मिनिमम रिइंफोर्समेंट को की तो आपको पता है, दिस इज द इक्वेशन 200 डिवाइड बाय Fy into BWD। थ्री अंडर रूट Fc प्राइम डिवाइड बाय Fy भी है, मगर इट विल बी गवर्निंग, and since it is grade 60 steel, so maximum reinforcement will be equal to 0.27 Fc prime divided by Fy into BWD। Why it is BWD, it is not B effective, इसकी रीजन मैं आपको बताऊंगा, मगर यहाँ तक बस आप इतना बस आप सिर्फ इतना याद रखें कि इस केस के लिए the maximum and minimum reinforcement will be same as for rectangular beam। Okay, 4 bars are required, 4 number 6 bars are required for positive moment. Okay, and a positive reinforcement is 1.53 inch square. From this, if you calculate the number of bars using number 6 bar, so 4 number 6 bars are required. And for negative reinforcement, you need this much area for negative moment. And if you calculate the number of bars, so I think 7 number 6 are required. Now how to place these bars in the sections? So positive bars will be provided in the bottom of the section, and negative bars will be provided in the top of the section. So if we draw the sections of
4 bars are required in the bottom. And 7 bars are required in the top. So we can provide 5 bars in the first layer and 2 bars in the second layer. इसको प्रैक्टिकली हम किस तरह प्लेस करेंगे? तो यहाँ पर अगर आप देखें, इफ वी ड्रा, यहाँ तक तो क्लियर है ना? आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर है सर। अच्छा, प्रैक्टिकली इसको हम प्लेस किस तरह करेंगे? तो यहाँ पर आप देखें, इफ वी draw the longitudinal section of this beam, so it will look like this. These are the columns on which the beam is supported. Okay. So what we will do, we will provide 4 bars in the bottom. So we will provide a hook at the end. ये हम lectures 5 में पढ़ेंगे. And these are the 4 bars which will be provided continuously in the bottom. With a cover of 1.5 inches. You know that. Okay. And as I told you that you can curtail 50% bars at the interior support only. Exterior support पर आप as per code curtailment नहीं कर सकते, because there will be small bending moment. There will be small bending moment even at the near the exterior support. अगर आप इसको देखें bending moment diagram को, इसमें आप देखें at the exterior support there is small positive moment, but there is some value of positive moment. तो इस पर code allow नहीं करता. But if you see at the interior support, even here if you see there is no positive moment. Okay. So at L by 8 from the interior support you can curtail the bars. Clear? तो आप इन 2 बार्स को curtail कर सकते हैं at the interior support only. तो यहाँ पर आप ये कट लगाकर आप इसको represent कर सकते हैं in the longitudinal section. It means that we have curtailed 2 bars from this layer. And अगर आप इसको देखें, this will be for example 4 number 6 bars, and we have curtailed 2 bars at the end at L by 8, and these are the 2 bars. 2 bars will be continuous. आप इसको practically place किस तरह करेंगे? You will provide 2 bars continuously in the bottom, and then you will place additional 2 bars in the center of the section from L by 8. Clear? यहाँ तक क्लियर है? सर ये जरा रिपीट करें सर। सर रिपीट करें थोड़ा सा सर। अच्छा, ये आप देखिए जरा, प्रैक्टिकली हम इसको अगर हम curtailment करते हैं पॉजिटिव बार्स में, इन बॉटम रिइंफोर्स में अगर हम curtailment करते हैं, तो code says that you can curtail the bars only at continuous ends. You cannot curtail the bars at discontinuous ends. यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब ये
कि आप 2 बार्स को कर्टेल कर सकते हैं एट कंटिन्यूस सपोर्ट, और उसकी रीजन मैंने आपको बताई कि पॉजिटिव एक्सटीरियर सपोर्ट पे आप इसलिए कर्टेलमेंट नहीं कर सकते कि देयर विल बी सम मोमेंट एट द एक्सटीरियर सपोर्ट, पॉजिटिव मोमेंट, ओके, small, there will be small moment, but there will be some moment at the discontinuous support near the support. But if you see at the continuous support, there will be no positive moment near the support. Clear? There will be negative moment. So that is why you can curtail the bars at the continuous support only. अब क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब वो कर्टेलमेंट हम प्रैक्टिकली किस तरह करेंगे? हम 2 बार्स को कंटिन्यूसली प्रोवाइड करेंगे लाइक दिस। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो फिर हम ये पीसेस कैलकुलेट करेंगे फॉर एग्जांपल फ्रॉम L/8 फ्रॉम दिस ऑफ द सपोर्ट, जितने भी बार बनते हैं उसको हम उतना पीसेस हम उन बार्स के दरमियान 2 बार्स यानी और लगाएंगे लाइक दिस, यहाँ पर भी लगाएंगे और यहाँ पर भी लाएंगे। इट विल गो टुवर्ड द राइट एंड इट विल बी, वी विल कंटिन्यू दीज बार्स टुवर्ड द लेफ्ट। क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि एट द सपोर्ट, एट द कंटिन्यूस सपोर्ट you will provide only 2 bars, okay। इसको अगर आप देखें ना, यहाँ पर अगर आप एक सेक्शन काटे तो इन द बॉटम you will see 4 bars, और अगर यहाँ पर हम एक सेक्शन काटे so in that case you will see 2 bars only। अब क्लियर है कि नहीं? मतलब ये कि आप ये 2 बार्स एट द कंटिन्यूस एंड एट द कंटिन्यूस सपोर्ट आप इन 2 बार्स को कर्टेल करेंगे। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। और सर इस केस में जो एल है ये पूरा बीम का जो स्पेन है ये एल है, या ये जो 2 सपोर्ट्स के दरमियान डिस्टेंस है? नहीं, ये जो क्लियर लेंथ है ln, इसको आप लेंगे। दिस इज बेसिकली ln डिवाइड बाय 8। ओके सर। अब क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर। अच्छा, अगर आप कर्टेलमेंट नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, आप इसमें इन्हें इस तरह भी कर सकते हैं कि आप all the 4 bars are provided and there is no curtailment in the bottom, इस तरह भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। यानी कर्टेलमेंट अलाउड है, अगर आप नहीं करते तो you are not bound, okay। सर जी सर, ये ऊपर जो बीम फ्रेम सिस्टम गिवन है ये रिजिड जॉइंट है सर, ये जिसको हमने नीचे पिन सपोर्ट कंसीडर किया है सर, तो ये हमने किस बेस पे किया? हाँ, ये आइडियलाइजेशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे फिर। मगर हम इसको एज ए पिन सपोर्ट इसलिए कर सकते हैं बिकॉज इवन इफ वी टेक इट एज ए पिन सपोर्ट, नेगेटिव मूवमेंट विल बी डेवलप्ड एट द सपोर्ट। अगर आप Yes, इसको sir. इवन पिन भी ले लें तो नेगेटिव मूवमेंट तो डेवलप होगा ना। यस सर। तो That फिर is सर why सपोर्ट्स पे we भी can- मूवमेंट आए। जी अगर फिक्स कंसीडर करें तो फिर एक्सटीरियर सपोर्ट्स पे भी हमारे पास मूवमेंट होगा। हाँ, मगर उसको हम फिक्स सपोर्ट कंसिडर नहीं करते ना, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो कनेक्शन है इट इज फिक्स कनेक्शन बट इट इज नॉट ए फिक्स सपोर्ट, यस सर। ओके। यस सर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है कि नहीं? नो सर।
अच्छा, इसमें आप देखें the 4 number 6 bar will be provided continuously in the bottom. Now what about the top? In the top we need 7 number 6 bars, but these 7 number 6 bars are required only on the interior support. Okay, so what you can do, practically we will provide 2 bars continuously like this. 2 number 6 bar will be provided continuously because you need at least 2 bars at every section to hold the stirrups. उसके लिए तो आपने कम से कम 2 बार तो प्रोवाइड करने हैं ना. You don't need these 2 bars at the exterior support because there is no moment, negative moment, but to hold the stirrup minimum you have to provide at least 2 bars even at the exterior support. Clear? Also there will be some resistance provided by the exterior beams or columns, so there will be some negative moment due to partial fixity of this connection. So we will provide 2 number 6 bar continuously in the top. ये clear है? These are 2 number 6 bars which have been provided continuously in the top, but since we need 5 plus 2 bar, that is 7 bars at the interior support, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 bars will be additionally provided at the interior support. Okay, और उसकी लेंथ किस तरह आप कैलकुलेट करेंगे, L/3 फ्रॉम दिस साइड. ये ऑलरेडी मैं आपको हम डिस्कस कर चुके हैं. So L/3 and this is the column width. इसको आप ऐड करें, you can calculate the length of these bars which will be provided at the interior support. तो 3 bars additionally आप प्रोवाइड करेंगे तो टोटल कितने बन जाएंगे ये bars? 5 number 6 bars will be provided in the first layer, but since we need 7 number 6 total bars, so 2 bars will be provided in the second layer like this. तो अब अगर हम फॉर एग्जांपल इनकी सेक्शंस बनाएं, फॉर एग्जांपल सेक्शन ए, this is section A, and at the interior support, for example, if we take another section, section B, तो ये अगर हम बनाएं, यहाँ पर आप देखें section A will look like this. This is section A, in which there are 2 bars in the top and 4 bars in the bottom. Okay, and in section B, you can see four bars will be in the bottom because there is no curtailment, and in the top there will be 5 bars in first layer and 2 bars in the second layer. Okay, this is section A, section B. इसका मतलब ये कि there is no curtailment in the bottom reinforcement or in the positive bars, while in the negative reinforcement we have curtailed these 3 bars in the first layer and 2 bars in the second layer.
अब क्लियर है कि नहीं? और सर ये बोथ साइड L/3 पे करेंगे। हाँ बिल्कुल, this is the longitudinal section. So this is very important step, because finally, as I told you, that the beams will be constructed based on your drafting. Okay, तो जितने भी आप refined calculations करें, finally if there is a mistake in the drafting, so the beam which will be constructed based on your drafting, it may fail due to the drafting mistake. Clear? यस सर। यानी अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है 7 नंबर 6 बार विच इज 5 + 2 नंबर 6 बार, और यहाँ पर आपके पास है 2 नंबर 6 बार। यहाँ पर अगर आप फॉर एग्जाम्पल 5 + 2 नंबर 6 की बजाय 5 + 2 नंबर 3 लिख दें, तो आप देखिए खुद कंसिक्वेंसेज आप सोच सकते हैं कि फाइनली इट विल बी कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन दिस। यहाँ पर आप लिखेंगे 4 नंबर 6 बार, यहाँ पर भी होगी 4 नंबर 6 बार। तो एवरीथिंग you should write very clear on the drawing. Clear? And of course there will be steps at which spacing, this we will discuss in the shear design. मगर स्टेप 12 होंगे, सही? These bars will be enclosed by the steps. यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज रह जाती है, that how to calculate this B effective। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर बता दिया that you take B effective equal to 87 inches। मगर ये किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं एज और द कोड, तो दैट इज वेरी सिंपल। यहाँ तक तो क्लियर है ना, कि ड्राफ्टिंग वगैरह क्लियर है? यस सर, क्लियर। अच्छा, अब ये बिल्कुल सिंपल स्टेप है इसमें कि आप ये बी इफेक्टिव किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो इस स्लाइड पर आप जरा इसको अगर आप देखें, तो there is a clear length of the beam which is denoted by ln. Okay, this beam has a clear length of ln। अगर आप इसकी सेंटर टू सेंटर लेंथ को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो बस आप इसके साथ ही सपोर्ट्स के विड्थ जो है, हाफ विड्थ ऑन दिस साइड, हाफ विड्थ ऑन दिस साइड, आप इसके साथ ऐड करें। यू कैन आल्सो गेट द सेंटर टू सेंटर लेंथ। अच्छा, सेंटर टू सेंटर लेंथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर द एनालिसिस। जो आप फॉर एग्जांपल एनालिसिस करते हैं WL²/8, उसमें आप सेंटर टू सेंटर लेंथ को पुट करेंगे। एंड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बी इफेक्टिव वी नीड ln, दैट इज द क्लियर लेंथ ऑफ द बीम। अच्छा, now these beams are provided at a clear spacing of, यहाँ पर हमारे पास इसको हम डिनोट करते हैं with SW, clear spacing between these beams, it is noted by SW। अच्छा, ये clear length और clear spacing for this case it is given here। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये गिवन है, ln is 24 feet and clear spacing is 12 feet। क्लियर? यस सर। अच्छा, यहाँ पर आप जरा देखें,
अब आप बी इफेक्टिव किस तरह कैलकुलेट करेंगे? इट इज वेरी इजी. Code says that the B effective for this B1, it will be least of these three equations. Number one, BW plus 16HF, BW plus ln divided by 4, and number three, BW plus SW. अब इस केस में आप के पास ln कितना है? ln की वैल्यू कितनी है? यार यहाँ पर आप देखें ना, 24. 24 feet. And what about SW? 12 feet. अच्छा, अब इसमें आप देखें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HF? थिकनेस ऑफ स्लैब कितनी है? 6 inches. BW कितना है? 15 inches. तो अब आप इन तीनों से आप जरा वैल्यूज मुझे बताएं. BW plus 16HF, it is equal to how much? 111. 111 inches, 111 inches. अच्छा, BW plus ln by 4. ये आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं? Sir, 87. 87 inches. Because ln is in feet, so you have to multiply ln with 12 inches. Clear? And 24 divided by 4, which is 6 feet, 6 multiplied by 12, 72 plus 15, it is 87 inches. इसी तरीके से यहाँ पर भी आपने इस W को, remember units shall be always consistent. ये कितना इसकी वैल्यू बताएं शाबाश. 159 से 159. So which one is the B effective? 87. 87 inches. तो ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, मगर बहरहाल आप इसको इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं. सही है? So now if the for any beam step system you can calculate the B effective, all other geometric parameters will be known to you, and you can design the T-shaped beam just like a rectangular beam. Clear? Yes, sir. अच्छा, अब ये सारी जो डिस्कशंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए. सही? इस तरह ये इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे. ये भी यहाँ पर BW plus 16HF, BW plus SW, BW plus ln by 4 ये ऑलरेडी गिवन है. सही? टेल बीम के लिए भी आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर? दिस इज केस 1 जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. केस 2 या आगे हम डिस्कस करेंगे.
अच्छा, फाइनली आपने इसकी फ्लेक्चर कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है, जो फाइनल स्टेप है इसका। तो वही तरीका है कि आप एक्चुअल रिइंफोर्समेंट के बेस पर डेप्थ ऑफ कंप्रेशन ब्लॉक कैलकुलेट करेंगे, क्लियर, और फिर उसे ASFYD माइनस A/2 से आप फ्लेक्चर कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो इस एग्जांपल को जरा सॉल्व करें, शाबाश। चलिए इसको हम इसी तरह डिस्कस करते हैं। इसमें अगर आप देखें, द डेटा इज गिवन टू यू, द रूफ इज ए 5 inch thick slab, which means that HF is 5 inches with beams having 30 feet center to center and 28.5 feet clear length। तो इसका मतलब ये है कि L center to center आपके पास है 30 feet। This will be required in the analysis of the beam। यानी बेंडिंग मोमेंट जो आप कैलकुलेट करते हैं WUL सेंटर टू सेंटर स्क्वायर डिवाइड बाय 8, उसमें आप L सेंटर टू सेंटर पुट करेंगे, सही। एंड 28.5 feet clear length, तो this clear length Ln, this will be required in the calculation of effective width। The beams are having 9 feet clear spacing and have been cast monolithically with slab। इसका मतलब T beam है। अच्छा, 9 feet clear spacing, beams are provided at 9 feet clear spacing। इसका मतलब ये कि SW is 9 feet। Overall depth of the beam including slab is 24 inch, so total depth is 24 inches, and the width of beam width being 14 inches, so BWB given है, H is 24 inches। Calculate the steel reinforcement area for the simply supported beam, and this beam is simply supported beam, so you can very easily calculate the bending moment using this equation, WU L square by 8, but L will be L center to center, against a total factor load including self weight of 3 kg per foot। तो already इसमें self weight भी include है and total factor load is given, so it means that this 3 kg per foot is, it is WU factored load, so you don't need to multiply 1.2, 1.6 load factor etc. The final factored value is given to you 3 kg per foot। FC prime is 3 KSI and FY 60 KSI। clear? Yes, sir. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? In the first step, since you can see that in a simply supported beam the flange will be in compression because it will be subjected to positive bending moment। तो इसका मतलब ये कि you have to first calculate the effective width of the beam। effective width का मतलब क्या है? This is basically the width which is effective in resisting the compressive stresses। इसका मतलब ये है, it is that width, that portion of the slab which is basically effective in resisting the compressive stresses। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट बी इफेक्टिव। बी इफेक्टिव की वैल्यू जरा मुझे बताएं। आपके पास BW भी है, Ln भी है 28.5 फीट, SW भी है आपके पास, इट इज 9 फीट। आपके पास ये तीन इक्वेशंस है, BW प्लस 16 HF, BW plus SW and BW plus Ln divided by 4। So in the very first step you will calculate B effective। ये वैल्यू जरा मुझे बताएं, शाबाश। $94 sir। और कौन सा इक्वेशन गवर्न करता है? ये इक्वेशन ना? Yes sir, first one। So 94 inches is the effective width of the beam। यहाँ पर ऑलरेडी ये कैलकुलेट हो चुकी है। 94 inches the effective width। Effective depth you can calculate from this, 24 minus 2.5, 21.5 inches। All other geometric properties
are given to you. Now, as I told you in the first trial, you will assume A is equal to HF, which is 5 inches. From this, you will calculate AS, which is coming 3.94 inches. Recalculate A, which is coming 0.98 inches. So 0.98 is less than HF, which is 5 inches. इसका मतलब है you can design it as a rectangular beam because A is less than HF. So आप इस 0.98 को दोबारा यहाँ पर पुट करें and recalculate AS. It is coming 3.56. In the next trial, again you will get the same AS value, which is 0.56, 3.56 inch square. If we are using number 8 bar, so number of bars required are 4.45. So we will provide 5 number 8 bars in the beam. और कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे? In the web or in the flange? जी in the web portion because web will be in tension. अच्छा, इसको आप मिक्सिम और मिनिमम के साथ कंपेयर करें. Minimum reinforcement is coming 1 inch square and maximum reinforcement is coming 4.06 inch square. Now, since we will provide 5 number 8 bar, and if we take the area of number 8 bar equal to 0.8 inch square, so then 5 multiplied by 0.8 is 4 inch square. So 4 inch square is less than the maximum reinforcement and it is greater than the minimum reinforcement. So your provided reinforcement is okay. And this is finally the drafting. We'll provide 3 number 8 bar in the first layer and 2 number 8 bar in the second layer. The B effective is given to you. 5 inches the thickness of slab. तो इसी तरीके से आप clearly इसको इसकी drafting करेंगे. सही? It is important from both from practical point of view as well as from academic point of view, because this part of the question will carry maximum marks. तो ये दोनों point of view से it is important. अच्छा, अब इसमें final step क्या रह जाता है after the drafting? Anyone? फ्लेक्चर कैपेसिटी को फाइंड करें. हाँ, इसकी फ्लेक्चर कैपेसिटी कैलकुलेट करें. दैट इज योर क्लास एक्टिविटी. चलो, यू हैव ओनली 10 मिनट्स. आप इसकी फ्लेक्चर कैपेसिटी कैलकुलेट करें. बिफोर कैलकुलेटिंग इट्स एक्चुअल फ्लेक्चर कैपेसिटी, आप पहले क्या करेंगे? यू विल कैलकुलेट द एक्चुअल इफेक्टिव डेप्थ डी, वो कैलकुलेट करें. एंड बेस्ड ऑन द एक्चुअल रिइंफोर्समेंट यू हैव टू कैलकुलेट द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द कंप्रेशन ब्लॉक. And from that you can calculate the flexure capacity. जल्दी करें, शाबाश. Okay, you can see here we have provided 2 bars. It can be 2 number 5 bars, it can be 2 number 6 bar. These are provided just to hold these stirrups. They are not required from the analysis. Clear? अच्छा, ये जो DC है, which is basically the distance from extreme tension fiber up to the centroid of tension reinforcement. H minus DC will basically give you the actual effective depth. Clear? So
क्वालिटेटिवली आप बता सकते हैं इट विल बी टुवर्ड द सेकंड लेयर, near to the second layer, or it will be near to the first layer? सर फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर को। और किस तरह कैलकुलेट किस तरह करेंगे? So first of all you will calculate the distance to the centroid of first layer, distance to न्यूट्रल एक्सिस centroid of फाइंड second करेंगे। layer। हाँ, न्यूट्रल एक्सिस नहीं, सेंट्राइड फाइंड करेंगे, न्यूट्रल एक्सिस इज समथिंग एल्स। सेंट्राइडल एक्सिस। ओके, सो d1 कितना होगा? Now you know that DC will be equal to A1 D1 plus A2 D2 divided by A1 plus A2. Now A1 is 3 number 8 bar, so 3 multiplied by 0.8, 2.4 inch square. A2 is 2 number 8 bar, so 2 multiplied by 0.8, it is 1.6 inch square. Okay, and what about the D1? D1 कोई बता सकता है? It will be 1.5 inch clear cover plus 3 by 8 inch is the dia of stirrup, and plus half dia of the number 8 bar, which is a dia of 1 inch. These are calculated. 2.375. It is 2.375, and D2 will be equal to D1 plus half dia of this bar plus clear distance between these two bars, which is 1.5, and half dia of this bar. तो इसका मतलब है कि D1 plus 1.5 plus total dia of the number 8 bar, which is 1 inches. तो ये जरा कैलकुलेट करें। 4.875। 4.875। तो ये आप देखें यहाँ पर A1 D1 all these parameters are known to you। इससे जरा DC कैलकुलेट करें, शाबाश। The 3.375. It is coming 3.375. Now from this you can calculate the actual effective depth D. So now D will be equal to total depth, which is 24, minus DC, which is 3.375. तो ये जरा कैलकुलेट करें, शाबाश। 20.625। 20.625 इस तरह है। Yes sir। Okay, now you can calculate the depth of the compression block based on the actually provided reinforcement. So depth of the compression block will be equal to AS Fy divided by 0.85 FC prime, और यहाँ पर हम B50 होगी या BW? सर BW। Why BW यार? यहाँ पर Be B50 effective. होगी, Yes sir, be affected. Sorry sir. because flange is in compression. Yes sir, बिल्कुल। अच्छा, AS की वैल्यू तो आपको पता है, it is 4 inch square, because 5 multiplied by 0.8 will give you total area 4 inch square. Fy is 60, FC prime is 3, and B effective is 94 inches. तो ये जरा मुझे A की वैल्यू बताएं, शाबाश। Quickly, शाबाश। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ना।
4 multiplied by 60 divided by 0.85 multiplied by 3 multiplied by 94. Sir, 1. Sir, almost inch. 1. So the depth of compression block is 1 inches. So now using this equation, phi Mn is equal to phi As Fy into d minus a by 2. You can calculate the actual flexure capacity. So 0.9 multiplied by 4 multiplied by 60, d is 20.625 minus a by 2, which is 1 by 2. Clear? ये जरा कैलकुलेट करें शाबाश. 4347. 4347 inch caps. And what was the demand moment? The demand moment here, WUL center to center square by 8, it is 4050. So this capacity is greater than the demand, which is 4050 inch cap. So the given section is sufficient to carry the given demand. Clear? Is there any question now? Sir? जी जी. सर ये जो हम फ्लेक्स कैपेसिटी मालूम करते हैं इसके लिए सर हम ये डी और ए की वैल्यू सर हम एक्चुअल पुट करेंगे सर. जाहिर है एक्चुअल पुट करेंगे. बेस्ड ऑन द एक्चुअली प्रोवाइडेड रिइंफोर्समेंट आप ये कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं ना. ओके सर वहाँ पे तो हाँ सर हमने सर डी को डायरेक्ट सर 24 से 1.5 और 2.5 वहाँ पर तो हमें पता नहीं था ना. वहाँ पर we don't know that how many bars will be required, how many bars will be finally placed. ओके सर. अरेंजमेंट ऑफ प्लेसमेंट भी हमें पता नहीं थी एंड नंबर ऑफ बार्स का भी हमें पता नहीं था. सही. ओके सर. एनी अदर क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? सर जी जी. सर पॉजिटिव और नेगेटिव मूवमेंट के लिए एस मैक्स और एस मिनिमम में जो बी हम पुट करेंगे वो दोनों बीडब्ल्यू हम पुट करेंगे दोनों में. नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव की तो बात नहीं है. नहीं यहाँ पे आपने नहीं, बस मैं वैसे कह रहा हूँ BW सर. यूज करना है. आपने वो इससे पिछले स्लाइड आप में. बिल्कुल BW यूज करना है. ओके सर. बिल्कुल BW आपने यूज करना है. सही. सर फिर तो दोनों के और लिए उसकी सेम. रीजन में बिल्कुल दोनों के लिए सेम होगा. यस सर. सर एस मैक्स और एस मिनिमम पर दोनों के लिए सेम वैल्यू आएगी. बिल्कुल सेम आएगी. इस केस में तो खैर सिर्फ पॉजिटिव मोमेंट है ना. नहीं सर, जो वो हमने जनरल प्रीवियस बात कर रहा केस. हाँ बिल्कुल दोनों सेम वैल्यू आएगी. सही. यस. पॉजिटिव मोमेंट केस 2 जो है, जो हम अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, उस केस में फिर पॉजिटिव मोमेंट के लिए एस मैक्स की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है. वो आगे हम डिस्कस करेंगे. मगर ये जो हम यानी नेगेटिव मोमेंट है या पॉजिटिव मोमेंट केस 1, उस केस में बोथ maximum and minimum reinforcement for negative as well as for positive moment, it will remain the same because both will be based on BW. Clear? यस सर. थैंक यू. अच्छा, मगर ये अगर आप देखें तो इसकी लॉजिक क्या है, यानी इवन फॉर पॉजिटिव मोमेंट वी विल पुट द वैल्यू ऑफ BW. उसके रीजन पता है.
उसकी रीजन ये है कि अगर आप देखें तो आपके पास C shall be equal to T, यानी compressive force shall be equal to tensile force, ये है ना? Yes, sir. And this C will depend on 0.85 C prime, which is constant for both, whether it is T shaped beam or L shaped beam or a rectangular shaped beam, and multiplied by area of the compression block. So in case of negative bending moment, it will be BWA. इस तरह है ना? Yes, sir. And in case of positive bending moment, it will be B effective into A. इस तरह है ना? Yes, sir. So finally this area will remain the same because BW, if we put BW, then the A value will be higher. If we replace this BW with B effective, so what will happen to A? आपने देखा A is coming 1 inches in this case, which is quite low value. तो फाइनल जो आपके पास एरिया, इट विल रिमेन द सेम. बात समझ में आ रही कि नहीं? Yes, यानी sir. बी इफेक्टिव तो आपके पास ज्यादा है, मगर उस लिहाज से आपके पास ए की वैल्यू भी कम हो जाएगी. क्लियर? अब क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Clear. So finally the area will remain the same. So that is why in the calculation of minimum and maximum reinforcement we will use BW. Acha, next we will discuss the positive moment case 2. Okay, case 2 को हम डिस्कस करते हैं. How to design the T-shaped beam when subjected to positive moment. Design of T section for positive moment and for the case when A is greater than HF. Clear? फिर भी बिल्कुल सिंपल है, आप इसको जरा देखें. If you know the basic concept of equilibrium, you can design any shape of the beam in any case. For example, this is T-shaped section, the same T-shaped section. And the effective depth, the depth of the compression block, that is A, is greater than HF. So in that case, you can see the shape of the compression block will not be rectangular, and that is why you cannot design the beam as a rectangular beam. Clear? So in this case, what you can do, you can divide this area in two portions. One is this part, the flange portion, of the beam, and the whip portion of the beam. Okay. For example, if we denote this area, with area 1, okay, and this is area 2, for example. अच्छा, इसमें अगर आप देखें, this area is known to you in advance because you know the thickness of the slab HF, and you also know the effective width of the beam, the effective. So can you calculate the area 1 from this?
आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. So area 1 will be equal to the width, which is B effective minus BW, इस तरह है कि नहीं, and multiply by the thickness, which is HF. Clear? Now, since this area is known to you, the flange area which is under compression, okay, area 1, that area of the flange which is in compression, and it is readily known to you. You can calculate this from this equation. So since it is known to you in advance, so corresponding to this area you can calculate the compressive force. For example, C1 resisted by this much area. कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? The compressive force resisted by area 1 आप कैलकुलेट कर सकते हैं? रिस्पांस नहीं दे रहा आप बिल्कुल यार. आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. कर सकते हैं. किस तरह कैलकुलेट करेंगे? Stress resisted by area 1, which at the ultimate stage will be always equal to 0.85 FC prime, and area which is under compression, which is B effective Yes, sir. minus BW into HF. This is the force, the compressive force resisted by area 1. यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? Yes, इसको हम sir. डिनोट Clear. कर सकते हैं विद C1 और CF. आप इसको C1 से भी कर सकते हैं या CF, जो भी हो. अच्छा, now corresponding to this, you can also calculate the reinforcement required to balance this compression force. The reinforcement required to balance this compression force. बात समझ में आ रही है ना? So the tensile force, which will basically balance this compression force, will be equal to AS1 multiplied by Fy. Now, if you compare these two equations, so C1 will be equal to T, so AS1, or you can say this equal to ASF, because this is the steel area which will basically resist the compression force developed in the flange. तो AS1 से भी कर सकते हैं, ASF से भी कर सकते हैं. This will be equal to C1, which is equal to 0.85 FC prime B effective minus BW into HF. यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब इसमें अगर आप देखें, all these parameters are known to you except AS1. Fy, FC prime, B effective, BW, HF, all these are known to you. So from this you can calculate the area which is required to balance this compression force C1. It will be equal to 0.85 FC prime into B effective minus BW into HF divided by Fy. अभी क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. So first of all, we will calculate the design reinforcement required
to balance the compression force resisted by area 1. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Clear. Sir. अच्छा, now from this, if for example if we take the effective depth equal to d, so from this you can also calculate the capacity corresponding to AS1 and how much capacity will be provided by this reinforcement, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. किस तरह कैलकुलेट करेंगे? phi mn1 for example, it will be equal to phi AS1 fy into lever arm. तो कोई बता सकता है what will be the lever arm in this case? This force will be resisted at the centroid of this area. This is the lever arm. कोई बता सकता है what is the value? D minus half of HF. हाँ बिल्कुल, this will be equal to D minus HF divide by 2. तो यहाँ पर आप ये पुट करें phi AS1 Fy into D minus HF divide by 2. Now this is the capacity corresponding to AS1, or you can say it is capacity corresponding to area 1 because you have calculated AS1, okay, based on the compression area 1. Clear? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब इसके बाद how much demand will be resisted by area 2, वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे? कोई बता सकता है? यानी जितना आपके पास डिमांड है उसका एक पोर्शन तो रेजिस्ट करेगा एरिया 1 जो कि हमने कैलकुलेट की, वो कैपेसिटी. सही है? अब इसके बाद हाउ मच डिमांड विल बी रेजिस्टेड बाय एरिया 2, वो किस तरह करेंगे? डिमांड तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना. देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास है टोटल डिमांड आपके पास है mu. नाउ द कैपेसिटी provided by the area 1 is phi mn1. Okay, so from this you can calculate the capacity provided by area 2. It will be equal to how much? mu minus phi mn1. इस तरह है कि नहीं? Yes, sir. In other words आप इस तरह लिख सकते हैं कि mu total demand will be resisted by capacity provided by area 1 plus capacity provided by area 2. अब क्लियर है कि नहीं? यहाँ आप देखें ना, total demand will be resisted by this area 1 and area 2. Clear? Yes, sir. अब Clear. corresponding, अच्छा अब corresponding to area 1 तो आपने कैलकुलेट की, तो इससे आप the extra moment which will be carried by the whip portion, you can calculate that from this equation. So phi mn2 will be equal to mu minus phi mn1. phi mn1 आपने already calculate किया है, mu से ये subtract करें, from this you will get phi mn2, or you can say that it will be equal to mu2 or mu extra, जिस तरह हम डब्ल्यू इनफोर्स में करते थे. mu2 चले इसको कहते हैं. सही? So mu2 will be equal to mu minus phi mn1.
अच्छा, अब इस mu2 के लिए आपने एरिया कैलकुलेट करनी है करस्पॉन्डिंग टू एरिया 2। अब इसके बाद वंस यू कैलकुलेट mu2 देन द डिजाइन इज जस्ट लाइक ए रेक्टेंगुलर बीम डिजाइन। आप देखें, यानी इसके लिए जस्ट आपने एक ही स्टेप है कि आपने mu2 कैलकुलेट करना है। बाकी आप देखें, वंस यू कैलकुलेट the mu2, so you can use the same equations, that is a is equal to mu2 divided by phi fy d minus a by 2, and a is equal to a is, अब इसमें जो a है it is basically as2, clear, as2 fy divided by 0.85 fc prime bw। यहाँ पर हम bw करेंगे बिकॉज आप देखें यहाँ पर इस एरिया 2 the width of area 2 is bw। अब क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो बस आप ट्रायल एंड एरर से आप as2 कैलकुलेट करें and the total area required in the beam will be equal to as1 जो ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं plus as2। this will be the total area to be provided in the beam। ये सिंपल है ना? अब यहां पर आप in the first trial a is equal to 0.2 dB assume कर सकते हैं, but since you know that a is greater than hf तो आप डायरेक्टली a assume करें। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास hf is equal to 4 inches, तो a in the first trial आप assume कर सकते हैं 4 inches। clear? Definitely it will be greater than 4 inches। अब आप देखिए बिल्कुल सिंपल आपके पास इक्वेशंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये एरिया 1 कैलकुलेट करेंगे। इट इज वेरी सिंपल, बी इफेक्टिव माइनस बी डब्ल्यू इंटू एच एफ मल्टीप्लाई इट विद 0.85 सी प्राइम, यू विल गेट C1। ओके, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट द reinforcement which is required to resist the compression force, to balance the compression force resisted by area 1, 0.85 fc prime b effective minus bw hf by fy। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। From this you can calculate the capacity provided by area 1 from this equation। From this you can calculate mu2 which will be total demand minus phi mn1, and then from mu2 you can calculate as2 from the same trial and error procedure as you are doing for the rectangular beam। Finally the total reinforcement will be equal to as1 plus as2। clear है? क्या था, क्लियर है कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब इस मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट किस तरह कैलकुलेट करेंगे? तो द मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट हम डिराइव कर सकते हैं, मगर इसको आप जरा देखें तो मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट फॉर एरिया 2 ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इट विल बी एस मैक्स फॉर सिंगल रिइंफोर्स बीम। यहाँ तक तो ठीक है ना? ए एस मैक्स फॉर टी बीम केस 2 it will be equal to as max for singly reinforced beam in a rectangular section, या singly reinforced तो है ही, इसको यहाँ पर हम लिखेंगे rectangular section, सही, plus the area required for resisting the area 1, यानी reinforcement required to balance the compression force resisted by area 1, so that is ASF or AS1।
इसका मतलब ये है कि the maximum reinforcement range will be increased for the T-beam, for true T-beam. Okay, by how much? By AS1. ये बिल्कुल सिंपल है ना, इसको हम डिराइव भी करेंगे, मगर आप इसको देखिए ज़रा, ये एरिया 2 की करस्पॉन्डिंग तो वही आपके पास मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट आएगी जो आप रेक्टेंगुलर बीम के लिए करते हैं। एडिशनली आपके पास इतना आप इसमें मजीद डाल सकते हैं रिइंफोर्समेंट। बाय हाउ मच? बाय AS1। अब क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो इस पर हम एक एग्जांपल सॉल्व कर देते हैं, आप यहाँ पर देखें। ये इसकी डेरिवेशन है, आप देखें ज़रा, मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट की डेरिवेशन। फाइनली मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस इज AST मैक्सिमम फॉर ट्री बीम, इट इज AS max फॉर सिंगली रेक्टेंगुलर एंड प्लस ASF और AS1। क्लियर? वही आप उससे डिराइव कर सकते हैं ये इक्विलिब्रियम। T will be equal to C1 plus C2. C1 is this one, C2 is 0.85 C prime ABW. Okay, if we replace A with, what was the value, if you remember, it was, I think, for grade 40 it was 0.31 D। जो भी हो, आप वो मेरे ख्याल में याद होगा, वो आप यहाँ पर पुट करें। सो योर AST will be AS mix। ओके, तो यहाँ पर अगर हम पुट करें, if we divide it by Fy all these terms, so this is basically, this will give you the maximum reinforcement for singly reinforced beam, and this will give you the ASF जो कि ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 0.85 if C prime B effective minus BW HF divided by Fy। क्लियर है ना? यस सर, क्लियर। This is another example. Design a simply supported T-beam to resist effected positive moment equal to 6700 inch cap. The beam is 12 inch wide, and इसका मतलब ये कि BW is 12 inch, having 24 inch total depth, H is given, it is 24 inches, including a slab thickness of 3 inches. तो आप देखें 3 inch तो regular beam slab system नहीं है, this is basically a joist system in which the beams are provided at very closer spacing। अब आप देखेंगे, and the thickness of slab is 3 inches, the center to center and clear length of the beam are, so this is the clear length Ln, this is the center to center, sorry, this is the center to center length, and this is the clear length of the beam, which is 24 feet, and the clear spacing between the adjacent beam आप देखें 3 feet। इसका मतलब ये कि beams are provided at a very closer spacing। So this is not the regular beam slab system, it is a joist system, one-way joist system। Take if C prime 3 KSI, if Y 60 KSI। So again, the first step is calculation of effective flange width. If you calculate this, so finally the governing is this one, 48 inches is your effective width। Clear? Now check if the beam is TR rectangular. So first of all, we will assume A is equal to HF is equal to 3 inches. From this you will calculate A is, which is coming 6.2. Recalculate A based on this area. You can see this is coming 3.04 inches, which is greater than HF। तो इसका मतलब ये कि the effective depth, that is A, is coming greater than HF, so we will design it as a T-beam। Clear? Now Yes, sir.
First of all, you will calculate AS1 or ASF. This is very easy. 0.85 FC prime B effective minus BW plus H multiplied by HF by FY. All these values are known to you. From this, you can calculate ASF, which is coming 4.59 inch square. Corresponding to this, if we calculate phi Mn1, so it will be equal to phi ASF Fy D minus HF by 2. It is coming 4957 inch cubes. So from this, you can calculate Mu2, which will be equal to total demand. Total demand is given here. It is 6,700 inch cube. So 6,700 minus the capacity provided by ASF, which is 4957.2 inch cube. इससे आप Mu2 कैलकुलेट करें, and once you calculate Mu2, then the rest of the design is just like the rectangular beam design. Clear? तो आप देखें Mu2 is 1742 inch cubes. Let A is equal to 0.2D. अगर आप 0.2D नहीं भी करें, इतना तो आपको पता है that A will be greater than 3 inches. तो यहाँ पर 4.3 inch है. From this, you calculate AS, which is 1.67. This is basically AS2. Clear? Recalculate A, which is coming 3.27. Finally, from trial and error, you will get the reinforcement equal to 1.62. So the total reinforcement will be equal to ASF or AS1 plus AS2. ASF, we calculated on the previous slide, it is 4.59. AS2 is 1.62, so it is coming 6.21 inch square. If you use number 8 bar, so 9 number 8 bars will be required for this. So the provided reinforcement, अब आप यहाँ पर देखें, it is 9 multiplied by 0.8, it is coming 7.2 inch square. Now you have to check it with the maximum reinforcement allowed in this beam. So minimum reinforcement तो वही है, BW के बेस पर आप कैलकुलेट करेंगे, it is coming 0.86 inch square. But what about maximum reinforcement? It is maximum reinforcement for singly reinforced beam, which is 3.48 plus ASF. And ASF we have calculated, it is coming 4.59 inch square. ये clear है ना? So 3.48, it is the maximum reinforcement corresponding to singly reinforced beam, rectangular section, and plus 4.59, which is ASF. It is coming 8.07 inch square. And the provided reinforcement here, it is 7.2 inch square. You just calculated here, it is 7.2 inch square. So the provided reinforcement is less than maximum and greater than minimum. So the design, the provided section is sufficient. Clear? अच्छा, अब आप इसकी जो if we provide these bars in 3 layers, and 9 number 8 bars are required. If you provide 9 number 8 bar in 3 layers, 3 plus 3 plus 3 number 8 bar. So corresponding to this, you can calculate the actual effective depth, and corresponding to actual reinforcement, you will calculate the actual depth of the compression block, and based on this you can calculate the capacity, the fluxure capacity of this section. So that is your home activity. Finally, आप इसकी capacity खुद check करें, calculate the actual capacity of this section and compare it with the demand moment. This was the end of the lecture. If you have any question in this lecture, you can ask the question. सर इस सेक्शन की रेडिएशन किस तरह फाइंड करें? दोबारा क्वेश्चन पूछे शाबाश.
सर ड्राफ्टिंग के बाद सर ये बार्स तो 3 लेयर्स में